Assalamu alaikum everyone. I am Mohammed Zaram and I hope that you guys are good and doing great. I pray that you all stay safe from this pandemic जो कि आजकल पूरी दुनिया में ही फैला हुआ है. So, let's start. Today I am making this video to explain the simulation of a Proteus based project which I decided to make for the course of Instrumentation and Measurement Systems. Actually, project तो हार्डवेयर पर बनाना था, लेकिन as you all know very well कि current situation क्या चल रही है. The universities are closed and nothing is very much easily available. So the project was also very much essential and I decided to go with the software that is called Proteus. In case you don't know what is Proteus, it is software which is used for the real-time simulation of all the electronic circuits on computers. And then I decided to make the project on this software, that is Proteus, in which I had to simulate a voltage sensor, a current sensor, and RTC module, और एटलीस्ट कोई भी एक सेंसर जो कि मेरे प्रोजेक्ट में यूज़ होने था इन तीन के अलावा. So the project which I decided to make was water flow management system. In this system, voltage sensor, current sensor और RTC मॉड्यूल के अलावा एक अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ हुआ था, एक फ्लो सेंसर और एक प्रेशर सेंसर. Since I have to simulate any one of the sensors, so I decided to go with an ultrasonic sensor and run it on Proteus using Arduino. So this is the Proteus model for the project which I made. The main part of this model is Arduino, and then I have used an ultrasonic sensor, a current sensor, a voltmeter as a voltage sensor, an RTC module, and LCD for displaying time and date, virtual terminal. These were the main components that were used. The other components are like switches, potentiometer, resistors, ammeter and LED. So this is all, and then we'll go with the features of the sensors that we use. So first of all, ultrasonic sensor. The ultrasonic sensor which I used is HCSR04. इस सेंसर के जो फीचर्स हैं वो ये हैं कि ये सेंसर प्रोवाइड करता है 2 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर तक नॉन कॉन्टैक्ट मेजरमेंट फंक्शन. जो इसकी रेंजिंग एक्यूरेसी है वो अप टू 3 मिलीमीटर तक जा सकती है, और जो इसके इलेक्ट्रिक पैरामीटर्स हैं वो ये हैं कि इसको वर्किंग वोल्टेज 5 वोल्ट रिक्वायर्ड होती है, वर्किंग करंट इज़ 15 मिली एम्पेयर एंड द वर्किंग फ्रीक्वेंसी शुड बी 40 हर्ट्ज. Besides this, the maximum range up to which the sensor can work is 4 meter and the minimum range is 2 centimeter. And this is the picture of ultrasonic sensor, and here is the timing diagram, and these are some precautionary measures, I guess. The module is not suggested to connect directly to electric. If connected electric, the ground terminal should be connected to the module first, otherwise it will affect the normal work. When tested objects, the range of area is not less than 0.5 square meters and the plane requests as smooth as possible, otherwise it will affect the results of measuring. So this was the data sheet of the ultrasonic sensor. So next we will see the current sensor, which is fully integrated Hall effect based linear current sensor, ACS271. This is a pretty good sensor. I use this current sensor ACS712 because when I went through the data sheet of this sensor, I found pretty much good characteristics in this, like it has low noise analog signal path, device bandwidth is set via the new filter pin. The output sensitivity is 66 to 185 millivolts per ampere. It requires 5 volts and is
a single supply operation, and the bandwidth is 50 kilohertz. Besides this, the other features are: this is the functional block diagram of this sensor, this is the pinner diagram, and some common operating characteristics, like the supply voltage should be minimum 4.5 volts, maximum 5.5 volts, but the nominal should be 5 volts. The supply current should be 8 milliamperes, which is nominal. Minimum is 6 milliamperes and the maximum is 11 milliamperes. Other than this, the frequency bandwidth should be 50 kilohertz, and the common performance characteristics, yeah, the sensitivity should be 185 millivolts per ampere at 25 degrees Celsius, and over full range of IP it should be 178 minimum and maximum should be 193 millivolts per ampere. And the other features are, these are some graphs of the characteristics performance of this sensor. So overall it has a pretty good performance, and these are the definitions of the accuracy characteristics, like noise, linearity, sensitivity, etc, etc. So this was a datasheet of current sensor ACS712, and let's go on to the next one, which is RTC module datasheet DS3232. The general description for this RTC module is: the DS3232 is a low-cost temperature compensated crystal oscillator with a very accurate temperature compensated integrated real-time clock and 236 watts of battery-backed SRAM. Additionally, DS3232 incorporates a battery input and maintains accurate timekeeping when main power to the device is interrupted. The integration of the crystal resonator enhances the long-term accuracy of the device as well as reduces the piece part count in a manufacturing line. The DS3232 is available in commercial and industrial temperature ranges and is offered in an industry standard 20-pin 300mm SO package. The features of this module are: accuracy is plus minus 2 parts per million from 0 degrees Celsius to plus 40 degrees Celsius, and the other accuracy for temperature range of minus 40 degrees Celsius to plus 85 degrees Celsius is plus minus 3.5 parts per million. It has a battery backup input for continuous time keeping, and the operating temperature ranges are 0 degrees Celsius to plus 70 degrees Celsius for commercial, and for industrial, minus 40 degrees Celsius to plus 85 degrees Celsius. The 236 watts of battery backed SRAM, and it has low power consumption. Real-time clock counts seconds, minutes, hours, day, date, month, and year with leap year compensation valid up to 2099. Besides this, the other recommended operating conditions are: supply voltage should be minimum 2.3 volts and maximum should be 5.5 volts, while the typical should be 3.3 for VCC, and for battery voltage the minimum should be 2.3, the maximum should be same 5.5 volts, but the typical should be 3 volts. Some electrical characteristics are: active supply current at VCC is equal to 3.3 volts, the maximum should be 200 microamperes, and for VCC 5.5 volts the maximum should be 325 microamperes. The temperature conversion current should be maximum 500 microamperes for 3.3 volts and 600 microamperes for 5.5 volts. Other than this, the electrical characteristics like timekeeping battery current is maximum 2.5 microamperes and typical is 1.5 for battery of 3.4 volts, and for the battery of 5.5 volts the typical should be 1.5 and the maximum should be 3 microamperes. So these were some notable characteristics of the
RDC module, and these are some graphs like push button reset timing, power switch timing, data transfer on I square heat, serial bus, and then there are graphs like supply current versus temperature, frequency deviation versus temperature versus aging, etc. And these are the description of the pins of the RDC module. NC means no connection, and the third pin 32 kilohertz, it is push pull output. The VCC is DC power pin for primary power supply. The INT bar or slash SQW means square wave output or active low interrupt. The RSC means active low reset. GND is ground. VPAT is backup power supply input. SDA is used for serial data input or output. This pin is the data input or output for the I2C serial interface. The SCL means serial clock input. This pin is a clock input for the I2C serial interface and is used to synchronize data. So this was all, I guess, from the datasheet of RTC module DS3232. So we are done with the features of the sensors that we use in our project model. So let's go towards the code understanding. So after going through all the features and characteristics of the sensors that we have used in our Proteus model, अब हम आ गए हैं आर्डिनो के कोड पर, जो कि हमने अपने प्रोजेक्ट को चलाने के लिए आर्डिनो के लिए बनाया है। तो इसमें सबसे पहले मैंने LCD के लिए एक लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस करवाई है जो कि लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच है, और इसके बाद RTC मॉड्यूल के लिए वाई डॉट एच। फिर मैंने अल्ट्रासोनिक सेंसर की दो पिन्स के लिए दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाए हैं। एको पिन जो कि आर्डिनो के 11 पोर्ट के साथ कनेक्टेड है, और पिंक पिन जो कि आर्डिनो के 12 पोर्ट के साथ कनेक्टेड है। एको पिन एक्चुअली रिसीविंग पोर्ट है जो कि सिग्नल्स को रिसीव करता है, और पिंक पिन ट्रिगर पोर्ट है जो कि सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। इसके बाद मैंने करंट सेंसर के लिए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया है जो कि आर्डिनो की ये 3 पोर्ट के साथ कनेक्टेड है, और इसकी सेंसिटिविटी को मैंने 121 सेट कर दिया है। इसके बाद एक एनालॉग वोल्टेज के लिए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया है, और जैसा कि सर्किट में हर टाइम कुछ ना कुछ वोल्टेज आ रही होती है, तो उसके लिए मैंने एक ऑफसेट वोल्टेज इंट्रोड्यूस करवा दी है जो कि 1000 मिली वोल्ट यानी 1 वोल्ट है। इसके बाद एक डबल का वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया है जो कि डिजिटल वोल्टेज को स्टोर करेगा, और फिर करंट वैल्यू के लिए एक और डबल का वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है। फिर ये लिक्विड क्रिस्टल LCD के लिए है, और ये 2 3 4 5 6 7 इसकी पोर्ट्स हैं जो कि आर्डिनो के साथ कनेक्टेड है। तो इसके बाद हम आते हैं अपने सेटअप के फंक्शन में। इसमें जो सबसे पहले नज़र आ रहा है सीरियल डॉट बिगिन, ये हमने वर्चुअल टर्मिनल को एक्टिवेट करने के लिए यूज़ किया है, और पिन मोड पिंक पिन यानी अल्ट्रासोनिक सेंसर में जो ट्रिगर है यानी आउटपुट जो सेंसर सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, और एको पिन यानी इनपुट सिग्नल रिसीविंग। एंड देन वी कम टू LCD.begin, which means that it activates the LCD जो कि 16 और सेकंड पोर्ट के साथ कनेक्टेड है आर्डिनो के, और wire.begin वर्चुअल टर्मिनल को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ किया है। फिर हमने यहाँ पर दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाए हैं कैरेक्टर के, टाइम और कैलेंडर के लिए, जो कि हमने टाइम और डेट को स्टोर करवाने के लिए किया है, और वो सभी बाइट्स हैं, सेकंड, मिनट, आवर, डेट, मंथ, ईयर। इसके बाद हमारा RTC मॉड्यूल का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है डिस्प्ले करवाने का। ये सारा फंक्शन उसलिए है क्योंकि जो बाइनरी में रीडिंग्स आती हैं उन्हें डेसिमल में करने के लिए, और ये एड्रेस स्टोर करवाने के लिए है। और फिर ये जो फंक्शंस हैं, ये दो स्विचेस यूज़ हुए हैं हमारे प्रोजेक्ट में
काउंटर और रीसेट का, तो उसमें जो मिनट्स, सेकंड्स, आवर्स, डेट, मंथ, ईयर चेंज हो रहा होता है, उसके लिए हमने ये फंक्शन यूज़ किया है। और एलसीडी डॉट सेट कर्सर 00, यानी एलसीडी पर जो फर्स्ट कॉलम होगा टाइम वाला, ये उसे प्रिंट करवाएगा टाइम, और जो सेकंड है एलसीडी डॉट सेट कर्सर 01, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम यानी कैलेंडर डेट को प्रिंट करवाएगा। इसके बाद हमने एक और फंक्शन यूज़ किया, वॉइड ब्लिंक पैरामीटर। ये एलसीडी पर जो हम टाइम और डेट चेंज करेंगे उसको ब्लिंक करवाने के लिए हमने एक वाइल का लूप यूज़ किया है, और हम उसे सेट करने के लिए इसको ब्लिंक करवा रहे हैं, जो कि 25 मिली सेकेंड के डिले के साथ होगा। उसके बाद हमने बाइट एडिट में बाइट एक्स, बाइट वाई और बाइट पैरामीटर्स के फंक्शन यूज़ किए हैं, और इसमें हमने ये इसलिए यूज़ किया है ताकि हम अपनी टाइम और डेट्स को एक लिमिट के अंदर रख सकें। आवर्स को 23 के अंदर, मिनट्स को 59 के अंदर, सिमिलरली मंथ में जितनी डेज होते हैं 31 उसको उसके अंदर रखने के लिए, और मंथ्स को 12 के अंदर रखने के लिए, एंड ऑल दैट। आफ्टर दैट हमने कर्सर को सेट कर दिया एक्स वाई पर, और फिर जो भी टेक्स्ट होगा उसे प्रिंट करवा दिया है 200 मिली सेकेंड के डिले के साथ। उसके बाद जो हमने कर्सर सेट किया था उसे प्रिंट करवा दिया है, और जो ब्लिंक पैरामीटर हो रहा था। उसके बाद हम आ जाते हैं और फिर जो हमने पैरामीटर्स ऊपर किए थे उनको रिटर्न करवा दिया। देन वी कम टू द void loop function which is used. So in this function of void loop we have used a variable for the voltage sensor in which we have stored the analog voltage in the variable of sensor value, और उस एनालॉग वोल्टेज को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये फंक्शन यूज़ किया फ्लोट वोल्टेज, जिसमें 5 से हमने मल्टीप्लाई किया सेंसर वोल्टेज को और 1023 से डिवाइड कर दिया है, जो कि टोटल बाइट्स हैं आर्डिनो के। इसके बाद आ जाता है करंट सेंसर का कोड। सबसे पहले हमने करंट एडीसी वैल्यू का एक वेरिएबल स्टोर करवाया जिसमें एनालॉग करंट रीडिंग स्टोर होगी, और उसके बाद हमने एनालॉग को डिजिटल करंट में कन्वर्ट करने के लिए ये वाली इक्वेशन यूज़ किया। 1024 से डिवाइड किया है और फिर 5000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर उस डिजिटल वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमने डिजिटल वैल्यू को ऑफसेट से माइनस किया है और उसको सेंसिटिविटी से डिवाइड कर दिया है। और फिर यहाँ पर हमने डिस्टेंस के लिए एक लॉन्ग का वेरिएबल यूज़ किया है जो कि इंचेस और सेंटीमीटर में डिस्टेंस को शो करेगा। यहाँ पे हमने डिजिटल राइट का एक फंक्शन बनाया है, पिंग पिन यानी ट्रिगर पिन। लो का मतलब ये है कि अगर अल्ट्रासोनिक सेंसर के सामने कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं होगा तो वो 2 माइक्रोसेकंड के डिले के साथ रीडिंग शो कर देगा, और जब ट्रिगर पिन हाई होगी यानी ट्रिगर के सामने कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाएगा तो वो 10 माइक्रोसेकंड के डिले के साथ रीडिंग शो कर देगा। और सिमिलरली जब वो ऑब्जेक्ट आकर चला जाएगा और सिग्नल्स लो हो जाएंगे तो तब वो रीडिंग्स को शो नहीं करेगा। इसके बाद हमने एको पिन यानी रिसीविंग पिन पर जब हाई सिग्नल होगा यानी सिग्नल रिसीव हो रहे होंगे तो तब हमने वहाँ पर डिस्टेंस को डिस्प्ले करवा देना है। इंचेस को माइक्रो सेकेंड्स टू इंचेस की ड्यूरेशन, ये फंक्शन है जो हम आगे जाके कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हमने प्रिंट करवाया सीरियल डॉट प्रिंट को, और
100 मिली सेकेंड के डिले के साथ प्रिंट हो गया। सिमिलरली यहाँ पर वोल्टेज प्रिंट हो गई है 100 मिली सेकेंड के डिले के साथ, और यहाँ पर करंट की वैल्यू डिस्प्ले हो गई है 100 मिली सेकेंड के डिले के साथ। एंड दिस इज ऑल कोड, एंड दिस इज द कन्वर्जन फॉर माइक्रोसेकंड्स टू इंचेस। माइक्रोसेकंड्स टू इंचेस के लिए हम माइक्रोसेकंड्स को 74 से डिवाइड करके और फिर होल वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे, और सिमिलरली माइक्रोसेकंड्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला प्रोसीजर यूज़ करेंगे। सो दिस वाज ऑल द code that we have made for the Arduino of our project. So let's go towards the simulation and understanding of the project. So after understanding the code for Arduino, हम आ गए हैं अपनी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के फाइनल फेज में, जो कि है सिमुलेशन को रन करना और प्रोड्यूस मॉडल को समझना। So let's run the simulation. It is running, and yeah, the code is initialized. So let's come to the working. यहाँ पर एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है जिसके मेनली दो पोर्ट्स हैं, जो कि ट्रिगर और एको। ट्रिगर सिग्नल्स को सेंड करता है और एको रिसीविंग, एंड वी हैव कनेक्टेड दिस अल्ट्रासोनिक सेंसर टू अ पोटेंशियोमीटर। इसका मकसद ये है कि जैसे कि रियलिटी में अल्ट्रासोनिक सेंसर किसी ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट करता है पास या दूर जाने पर, तो उस पर्पज़ के लिए हमने एक पोटेंशियोमीटर लगा दिया है, जिसकी वजह से इसकी रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होगी और डिस्टेंस चेंज होगा। यू कैन सी हियर इन दिस वर्चुअल टर्मिनल विंडो दैट डिस्टेंस इज चेंजिंग। सो इसका पर्पज़ ये था। देन लेट्स कम टू द करंट। हम स्विच क्लोज करेंगे और यू कैन सी दैट यहाँ पर रीडिंग्स आ गई हैं, और वर्चुअल टर्मिनल पर भी रीडिंग्स आ गई हैं। नेगेटिव इसलिए आ रही है कि मेरे ख्याल से मैंने इनके टर्मिनल्स को अपोजिटली कनेक्ट कर दिया है, मे बी। सो या दिस मीन्स एंड आवर सर्किट इज वर्किंग। द नेक्स्ट comes is voltage sensor. The voltage sensor is also connected to a potentiometer. ये भी वोल्टेज चेंज करने के लिए हमने पोटेंशियोमीटर लगाया है ताकि हम वोल्टेज को अपने हिसाब से चेंज कर सकें। You can also see here in this window the voltage has changed from 5 volts to 2.05 volts. हमने बेसिकली पूरे सर्किट को 5 वोल्ट अप्लाई किया है क्योंकि all the circuits work fine on this voltage, that is 5 volts. बाकी कंपोनेंट्स जो कि अटैच हैं आरडीसी मॉड्यूल, इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है आर्डिनो के A4 और A5 पोर्ट के साथ। A4 पोर्ट सीरियल क्लॉक के साथ कनेक्टेड है। सीरियल क्लॉक का बेसिक जो मकसद है वो ये है कि synchronize data, and the purpose of serial data is input or output of serial interface, and that is all. And finally the virtual terminal, which is the window that is shown here, and last but not least the LCD display. We have used two switches, one is reset and the other is starter. So I'll show you the working of these two buttons. Let's first close them both, then open. You can see that the time has started here. So अगर मैं इस स्विच को ओपन करता हूँ तो ये स्टॉप हो जाएगा, और इसको क्लोज करके दोबारा ओपन करूँ तो ये चेंज कर देगा, दूसरे सेकंड्स वाले विंडो पर चला जाएगा। And similarly we can change the seconds also, and then comes the date in the similar way. The date is changing, so let's see. Here is, let's set it here at 10, and similarly month,
Similarly, month is also changing, and in the same way, year. So this was all. The LCD is connected to the corresponding ports of the Arduino. So this was the working of our project. Hope you liked it, and please, if you liked it, don't forget to subscribe, comment, and like. Thank you so much. Love this. Take care. Stay safe. Stay blessed.